startup is never a dream for us. It became a response to what we lived through. In 2017 and 18, in Kerala, we faced a devastated flood. So we also affected our farmlands. Then we came to start to study about the issues. Then my brother Devan Chandrasekharan and I took the initiative for understanding the real problem of the farmers. So we found that they are facing issues with crop damage and plant treatment method. At this point, we knew we had to step up. Devan, an aeronautical engineer, he led the technical vision. I, an electrical engineer, handled execution. So we manufactured 2 drones, something unheard of those times. Niriksh for crop diagnostics and FIA for crop treatment. We did demonstration in our farmland and our neighboring farmlands. The impact was clear. A 70% drop in cost and 30% increase in yield. For farmers, this means higher income, lower risk, and most importantly, dignity in farming. With successful demonstration and field trials, but still facing investor rejections, we took a plunge and launched our company, Fuselage Innovations, in 2020 as a completely bootstrap venture. We reached almost all over the banks, and nobody is ready to fund us. No one has the courage for that. That too in COVID time. But through Startup India support, we secured grants under Startup India Seed Fund Scheme, Nidhi Prayas, NABARD, Ministry of Electronics, and many others. This was not just a financial support for us. It was an institutional trust and validation. Today, Fuselage Innovations operates from Maker Village and Kerala Startup Mission in Cochin. And we are developing DGCA certified drones for agriculture, defense, and disaster management activities. We started with a 10 lakh rupees. That was a loan from Agri Infra Fund, and now we are turning into a 10 crores company with 40 employees, and we had a good core team. Thank you. We now work with more than 10,000 farmers all across the country, mostly in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Mizoram, and Assam. And now we are exporting drones to other countries like Africa, Europe, and US. But the journey is not easy. Scaling a hardware startup and securing a right investment is one of the toughest challenges we face. In next 5 years, we are planning to deploy 10,000 drones to agriculture and maritime operations. The vision of our Honorable Prime Minister has given founders like us the confidence to believe that the innovation from the grassroots matters. Vikasit Bharat 2047 will be built by the entrepreneurs who stay close to the real problems and use the technology wisely. At Fuselage Innovations, we always believe that technology is a great equalizer. That's why we are consistently striving for good tech-backed agriculture practices to grow more. And today, I love to thank you to our Honorable Prime Minister to encourage us to dream, build, and contribute meaningfully for our future India. And all the best to my fellow entrepreneurs. Jai Hind. Now invite our next founder, who has helped reshape how India connects talent to opportunity, Nirmit Parikh, founder and group CEO of Apna. Apna has emerged as one of India's most impactful platforms for early career hiring, connecting job seekers and employers across hundreds of cities and strengthening employability at scale through technology and partnerships. Nirmit? Honorable Prime Minister, sir, dignitaries, and the startup ecosystem. Namaste. मेरा नाम निर्मित पारिक है and मेरी जर्नी काफ़ी सिंपल है पर मेरे सपने इंडिया स्केल है.
आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया. फिर उसके बाद मैंने निरमा से इंजीनियरिंग किया, डिड माई MBA फ्रॉम स्टैनफोर्ड, और मैं सिलिकॉन वैली में एप्पल में काम कर रहा था. उसी दरमियान एक पिक्चर आई थी, गली बॉय. उसमें एक सॉन्ग था, आपने सुना होगा, अपना टाइम आएगा. सो सिलिकॉन वैली में मैं वो थिएटर हॉल में वो पिक्चर देख रहा था, और जब वो गाना सुना तो दिल में कुछ क्लिक हुआ कि अपने इंडिया में कितना सारा लोग है जिसके दिल में एक चैंपियन छुपा हुआ है. बस कमी है एक प्लेटफॉर्म की जो उस चैंपियन को राइट जॉब और राइट अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट कर सके और उनके सपनों को उड़ान दे. और जब वो सोच रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं वापस इंडिया जाए. सो अमेरिका से सब सामान पैक किया एंड आई केम बैक टू इंडिया, अपने भारत, टू स्टार्ट द कंपनी अपना. टुडे अपना हैज 60 million users, 6 crore users. We are working across 900 cities. 4 लाख MSMEs और निफ्टी की टॉप एंटरप्राइजेस ऑल्सो यूज अपना फॉर देयर हायरिंग. नाउ जैसे अपना का स्केल बढ़ता गया, हमको ज़रूरत होने लगी कि हमको AI, रेज्यूमे प्रेपरेशन, इंटरव्यू प्रेपरेशन और जॉब मैचिंग जैसी जगह पे लगाना पड़ेगा. बट एक चीज़ बहुत क्लियर था कि इम्पोर्टेड AI नहीं चलेगी. बिकॉज अगर आप इंडिया देखिए तो इतना लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, इतना टोन डाइवर्सिटी है, इतना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है. सो AI भी इंडिया की चाहिए. इसलिए हमने खुद की एक वॉइस AI सिस्टम बनाई जो लोगों को रेज्यूमे मैचिंग और सब में हेल्प करे. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर, in the last 1 year we have done 10 crore job matches and interview preparation for the citizens of the country. And वहां से एक नया मैजिक चालू हो गया. हमने जो इंटरनल एंटरप्राइज AI बनाई थी जिसको हम ब्लू मशीन्स बोलते हैं, वो इतनी अच्छे से चलने लगी कि इंडिया की सबसे टॉप फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, साउथ ईस्ट एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हमारा वॉइस AI यूज करने लगी. सर मुझे बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि 5 days ago we broke the biggest global benchmark on voice AI when we did a 60-minute uninterrupted debate without any hallucination, with multiple context and zero latency leaks. And for me, ये innovation का सवाल नहीं है, ये सवाल है भारत की प्रतिभा को वर्ल्ड के बेस्ट के साथ खड़ा रखने की. And that makes me very happy. And I am very very thankful to the entire startup ecosystem and the startup India ecosystem. बहुत बार हमको टैलेंट में बहुत हेल्प मिली है, पर्टिकुलरली ऑल्सो फंड रेजिंग में काफ़ी हेल्प हुआ है. एंड एज वी आर ऑन द 10th year anniversary, I have one but small humble recommendation. And my recommendation is, in the last 10 years, a lot of companies like us have now become India scale. And it will be great if the Startup India ecosystem can help us to grow world scale. Build, how can we go to US? How can we go to Europe? How can we go to more Southeast Asia? And I'm looking forward for that. And अगर वो होएगा तो सर मेरी जर्नी अभी भी सिंपल रहेगी, पर मेरा सपना भी वर्ल्ड स्केल होएगा. जय हिंद. थैंक यू सो मच.